Now, in this second part of your lab, we will be discussing the difference of your access mode and trunk mode, right? So, as you're familiar with the fact कि आपका जो switch होता है, there are a set of 25 ports available in it, right? अच्छा, either those ports are configured in the form of access port या आप उनको configure करते हैं in the form of trunk ports, right? You have the option of configuring them in either of this version. Now, when if a set of two switches are connected with each other and they are configured in the form of access port, इसका मतलब ये है कि there is only one VLAN available, ठीक है, initially in your specific जो आपके Cisco packet tracer है, virtually there is always a LAN, virtual LAN enable named by VLAN1, right? But you can change it and you can add VLANs, ठीक है, और वो VLAN actually use होती है for your inter switch communication and inter switch and router communication, right? Now when you are adding अच्छा, when you are using access port, इसका मतलब कि there is a possibility of communication of only one VLAN, right? सिर्फ एक VLAN आप यूज़ कर सकते हैं and एक VLAN के साथ ही आप communication कर सकते हैं of all the system. इसका मतलब जितने भी systems attach हैं, they should be on that specific VLAN. If you're adding VLANs, अगर आप 2, 3, 4, 5 VLANs add कर रहे हैं, ठीक है, and there's a connection between your switches and switches are further connected to let's say 25 PCs. अच्छा, ठीक है, ये भी आपके कनेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. इन दैट स्पेसिफिक केस जहाँ पे आपके पास VLANs ज़्यादा हैं, आपने खुद इंस्टॉल की, बाय कोडिंग आपने इम्प्लीमेंट की है VLANs, देन यू रिक्वायर a port which is called trunk port. अब ये trunk port, this is a version of port कि आप जब इसको enable करते हैं, then this port can make possible the communication of all the VLANs, right? अगर आपके पास let's say 5 VLANs हैं, all of the 5 VLANs and the system on that specific VLAN can communicate with each other, only with each other, not a system of 10th VLAN number 10 can communicate with VLAN number 20. But yes, VLAN 10 systems can communicate with each other when your two set of switches are connected with each other with the help of your trunk port commands, right? सिमिलरली 26 PC जो है VLAN 20 के जितने भी PCs हैं वर्चुअल LAN के, they can communicate with each other but only with themselves, right? VLAN 10 PCs cannot communicate with VLAN 20. उसके लिए we will be discussing details shortly. So when you enable a trunk port, then how is the mechanism working? आपकी VLAN tagging होती है, right? अप टू जो आपका यहाँ से पहले जितने भी आपके लेट से स्विचेस के साथ आपके स्विच, दिस स्विच कैन बी कनेक्टेड टू लेट से 25 पीसीज, जिसमें से लेट से 15 आपके कनेक्टेड हैं और 10 कनेक्टेड हैं विद VLAN नंबर 1 एंड द 10 आर कनेक्टेड विद VLAN नंबर 2, ठीक है, बट दे आर physically they are connected to a single LAN, right? And that LAN is further divided into set of two VLANs, virtual LANs, right? So जब वहाँ से आपका डाटा आता है टू योर स्विच, देन all of these connection are on the basis of access port up till आपका switch arrival, right? जहाँ पे आपका switch arrival आता है वहाँ पे if your trunk port is enabled जैसे कि यहाँ पे है, then all of the data of these VLANs just go through this trunk port, right? आपने enable किया है, यहाँ पे पहुँच के आपका जो भी पैकेट होगा उस पर टैग लगता है that it is of VLAN number 1. यहाँ पे जब जहाँ पे एंडिंग है, जहाँ पे इसके बाद फर्दर आपका पीसी अटैच होता है, इसी स्विच पे आपका टैग रिमूव हो जाता है एंड देन फर्दर आपकी ट्रैफिक जो भी जिस स्पेसिफिक पीसी पे जानी थी उस पे आपका पैकेट डिलीवर हो जाता है. विदाउट टैगिंग इट कैन नॉट हैंडल इट, राइट? सो इसका मतलब इफ़ देयर इज़ नो टैग then there is a possibility of only one VLAN, either let's say it's VLAN 1 and it can communicate with all the PCs on the other side which are also on VLAN 1, but you cannot in access port version you cannot install 2 or 3 or 4 VLANs. हाँ आप कर सकते हैं but communication won't be possible, inter switch communication, यहाँ पे आके आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, you wouldn't be able to communicate, right? And yes, you have added but you cannot make the communication possible. So yes, this is the concept of VLAN tagging जो enable की जाती है with the help of your trunk port commands. Again थोड़ी सी डिटेल के साथ सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है. नाउ द कमांड uses
जो आप ट्रंक पोर्ट की कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आइदर यहाँ पे आपका मोड ट्रंक यूज़ होगा, आइदर इट वुड बी एक्सेस, एज देयर आर टू वर्जन्स, राइट, एज आई सेड टू यू प्रीवियसली। नाउ एक्सेस इज for your only single VLAN communication and trunk is जब जहाँ पे आप multiple VLANs की इंटर VLAN कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, मीन्स VLAN 1 की VLAN 1 के साथ ही करवा रहे हैं, बट there are set of 5 to 10, let's say, VLANs. There's a VLAN 2 and again VLAN 2 PCs, VLAN 3 and VLAN 3 PCs, यहाँ पे भी connected है, वहाँ पे भी। तो इन all VLANs को simultaneously communicate करवाने के लिए between switches you will be enabling your trunk port, right? अगर आप इस पोर्ट को enable नहीं करते, you are using your access mode, then there would be only one VLAN possible, right? Either one or either two, ठीक है, at a time आपकी एक ही VLAN की कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पे आके आपका पैकेज ड्रॉप हो जाएगा, राइट? सो यस, एक VLAN कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट अदर देन जो सिस्टम्स होंगे अदर देन दैट स्पेसिफिक VLAN, उनकी कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी, राइट? सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एक्सेस पोर्ट एंड योर ट्रंक पोर्ट and the difference between them and why we are basically using this specific command of configuring your access or trunk port, right? So as I said to you previously, 802.1q encapsulation is that specific protocol technique used जो आपकी ट्रंक पोर्ट्स में यूज़ की जाती है, VLAN इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। द स्टैंडर्ड्स जो भी डेवलप किए गए हैं, दोज आर फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वर्जन, राइट? पैकेज जो आपके इनकैप्सुलेट होते हैं उन पे जो टैग लगता है, टैग ऑफ दैट स्पेसिफिक VLAN, राइट, हेडर में आपके that tagging element has been added and then the packet is forwarded accordingly. This entire procedure is according to this specific standard. Now this is again a better understanding जो आपकी trunk port की है, ठीक है? Consider these version as a circle जो है, it's a VLAN 1, then there's a square of other VLAN and third VLAN, right? Inter switch communication separate VLANs की हो रही है and at a time one VLAN की possible है, but yes, at a time all of them virtual LANs can communicate with each other when you configure your trunk LAN, right? So trunking make the communication of multiple VLANs possible, right? But जो आप if you're not using it, you can at a time only use a specific VLAN, right? Either one, either two, either three, but simultaneous communication आपकी trunk के साथ ही possible है, but again still simultaneous communication but only between a specific virtual LAN, जैसे कि LAN 1 है और LAN A है, तो let's say यहाँ पे आपके 5 PCs connected of LAN A and 5 of LAN B, and there are 5 of LAN A and LAN B, then those 5 of LAN A can communicate with these 5 of LAN number A simultaneously, means वो भी communicate कर रहे हैं। यहाँ से आपका जो LAN number B के 5 PCs हैं, यहाँ पे जो 5 PCs हैं, they can also simultaneously communicate with the help of your trunk port. But अगर आप access port को use कर रहे हैं, then at a time only one VLAN can intercommunicate, right? Okay, so commands जो आपकी हैं, so थोड़ा सा if you can you would be in your configuration mode, right? and वहाँ पे when you enter your commands, डेफिनेटली आप कौन से इंटरफेसेस यूज़ करें, कौन सा ईथरनेट पोर्ट नंबर आपका स्विच का यूज़ हो रहा है, यू विल मेंशन दैट स्पेसिफिक इंटरफेस एंड आफ्टर दैट स्विच पोर्ट मोड आइदर एक्सेस और ट्रंक. Now access port can carry traffic in only one VLAN, right? But to set the access port to carry traffic for a different VLAN, ठीक है, और multiple VLANs, you use basically this command which is trunk, ठीक है. Access can carry only traffic in one VLAN, remember this concept, right? Okay, switch port access, then your VLAN and then your VLAN ID. यहाँ पे आप mention करेंगे कि when you are using your access port version VLAN ID, you will mention your ID here कि आप कौन सी VLAN को now presently communicate करवाना चाहते हैं, right? So you're giving your ID, let's say it's 10 or it's 20 or it's 30, जो भी आपने name रखा है,
ठीक है. Access port will carry the traffic of your specified VLAN, right, जिसकी आप ID specify करेंगे, and only that specific VLAN. Okay, so when you are moving toward your trunk version, now trunk port, again आप interface slot numbers add करेंगे and then switch port mode trunk, right? So a trunk port can carry traffic in one or more VLAN on the physical link, right? That's the difference. ठीक है. Again मैं आपको mention नहीं करूँगी. There are two options of VLAN tagging, ठीक है, but we will be using .iq version, not ISL version, ठीक है. Specifically lab number 8 में you will see some details of this tagging version. and जब आप inter VLAN routing कर रहे हैं means आप दो VLANs की inter VLAN communication करवा रहे हैं. means LAN number 10 है for example and there is LAN number 20, तो उनकी आपस में inter communication करवाने के लिए you will be using a layer 3 device first of all, which is a router, ठीक है. and encapsulation procedure would be 802.1q, which is .iq version, right? इसको use करते हुए we will be making two LANs communicate with we will make it possible to two LANs do intercommunication, right? एक दूसरे के साथ communicate करवाना चाहते हैं तो वो procedure आपका इसमें follow होगा, right? So what is basically VLAN trunking protocol, ठीक है. आपने थोड़ा सा इसकी डिटेल पहले भी trunking protocol, as I have discussed, protocol is a set of message, but trunking means specifically designed किया गया that protocol for your VLAN inter switch communications, right? and it uses two versions of your VTP advertisements are sent on two versions, right? Either it's a 802.1q or it's a inter-switch link trunk. These are the two trunk version protocols, right? Okay, so when we will be using our layer 3 जो आपका जो router होता है, when we will be using router, ठीक है, so ये this version जो है this will be followed in that communication, right? So this is all for your theory version of your lab. Let's move toward your actual lab performance, which will be discussing your both the procedures of only LAN to LAN virtual LAN to virtual LAN, only mean between a specific LAN communication and enabling a trunk port, and then between two different virtual LANs, right? उनकी communication आप कैसे possible करेंगे, and router is required in that specific communication, right? Yes, आप trunk port वहाँ पे भी enable करते हैं, but protocol use would be .iq, right, on your router, and then you would be using this encapsulation technique. आपके जब टैग लगते हैं यहाँ पर पहुँच कर, तो again वो because it's going from a different LAN to a different LAN, तो यहाँ पे आपकी encapsulation and tagging procedure is basically followed, which is in lab number 8. yes, आपका lab number जो 7 है वहाँ पे भी होता है, but it's between two switches, it's just between a specific LAN, ठीक है. आप इंटर LAN कम्युनिकेशन करवा रहे हो, इंटर वर्चुअल LAN, राइट? तो खैर दिस इज़ ऑल आपकी लैब नंबर जो 7 and 8 है इनकी थ्योरी के बारे में. लेट्स जस्ट मूव टुवर्ड योर प्रोसीजर ताकि आपको क्लियर हो हाउ इट ऑल वर्क्स and how a virtual LAN is configured.